अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एक्विजिशन की कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करना, इसको लर्न करना, उसके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को या फॉर दैट मैटर किसी भी लैंग्वेज को जब आप सीखना चाहते हैं तो आप फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वो सारी चीज़ें, और इसमें फॉर्मल फॉर्मल वर्ड्स कौन से हैं या इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी हम फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए या जिनको अटेन करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। एक एक एक्टिविटी है कॉन्वर्सेशन। इट कैन बी वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जब भी आप कॉन्वर्सेशन करेंगे या आप डिस्कशन में हिस्सा लेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली एक टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे आप बात करेंगे, आपके पार्टनर पार्टनर के साथ बात करेंगे। लेकिन एज अ बिगिनर यू ऑलवेज कंफ्यूज थिंग्स एंड समटाइम्स स्मॉल लिटिल थिंग्स फ्लमॉक्स यू, और आपको समझ ही नहीं आता मैं कौन सी चीज़ों पे बात करूं, कैसे बात करूं। जैसे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, सर हमने घर पे कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, लेकिन बात ये हो गई कि हमारे पास जो पहले तो टॉपिक ही नहीं था, फिर अगर कोई टॉपिक था उस टॉपिक के बारे में हमारे पास नॉलेज ही नहीं थी, तो हम बात नहीं कर पाए। तो मेरा ये मानना है एज अ बिगिनर यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, global warming, economic crisis, budget. You don't need to talk about those huge things. आप small little things, कोई everyday common सी चीज आप ले लें। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आप horse की एग्जांपल लेंगे, HORSE, horse. Now, what can you talk about horse? You know, horse पे क्या डिस्कशन कर सकते हैं? Let me tell you, as a beginner, जब आप conversation करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, it really doesn't matter what you are saying or talking about, as long as you are talking. आपका बात करना important है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, it doesn't matter. Sometimes coherence नहीं है। आप जब बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो आपकी conversation कहीं से स्टार्ट होती है, कहीं चली जाती है, it doesn't matter। क्योंकि आप किसी सेमिनार में नहीं बोल रहे हैं, आपके पास ऑडियंस सामने आई एम सॉरी, आप ऑडियंस में वो लोग नहीं बैठे हैं जो आपकी स्पीच को इसको रेट करने वाले हैं, आपको इससे जॉब मिलने वाली है, ये भी आपको इनाम मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। यू आर जस्ट डूइंग इट बैक होम विथ योर फ्रेंड और योर कजन और योर सिबलिंग। तो आप ये कर रहे हैं सीखने के लिए। तो हॉर्स, अगर आप एक मान के चलें एक टॉपिक है आपका हॉर्स, अब आप स्टार्ट करें। सो अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट अ हॉर्स? यू से अ horse is an animal. A horse is an animal. It's a quadruped, four-legged animal. Fine. Uh, okay, how many types of animals are there? There are a lot of animals. There are domestic animals. There are wild animals. Okay. Where do wild animals live? They say wild animals, they generally live in forests, obviously. Okay, forests. So in forests, how many types of trees are there? Yeah, well, I have no idea about how many trees there are, but I can say that trees are really important. Okay, how are trees important? Trees give us oxygen, they give us this, they give us that, they give us that. All right, should we cut trees? Or should we fell trees? I don't think we should cut down trees, because without trees we cannot do. Trees are really important for us, or for the survival of mankind. Okay, why do people cut trees? I don't know. Maybe they are selfish, they are greedy, they want to earn, and they're doing it at the cost of a bigger thing, and whatever it is. Okay, anyways, should government play a part in it? Should they stop people from doing this? तो इस पे बात हो सकती है। देखिए, हमने हॉर्स से स्टार्ट किया। हॉर्स पे जब बात शुरू, सवाल जब शुरू हुआ तो एनिमल्स पे जा पहुंची। तो जब आपने एनिमल पूछा तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल्स के मुतालिक था। सो इट वाज डोमेस्टिक एंड वाइल्ड। फिर हमने वाइल्ड एनिमल्स पे सवाल पूछा तो आप जंगल पे आप पहुंचे, फिर ट्रीज पे आप पहुंचे, फिर ट्रीज की इंपॉर्टेंस, फिर ट्रीज उनको काटा जाता है, इससे क्या नुकसान होगा, फिर गवर्नमेंट की बात आई। तो जब हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, अगर मेरा फोकस सिर्फ हॉर्स पे रहता तो मेरी कॉन्वर्सेशन कहीं नहीं जाती। मैं ये समझता, दो क्वेश्चंस करने के बाद मैं ये समझता कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं, तो मैं खामोश हो जाता। तो आपने खामोश नहीं होना है। जब भी आप बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन, तो जब भी आप किसी चीज पे बात करेंगे, सो यू कैन स्टार्ट, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट वाज हॉर्स, आप कोई और चीज लेंगे, पेन, आप लेंगे शूज, फ्रेंड।
तो जब आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, सो एक क्वेश्चन जो आपने पूछा, सामने वाले ने जवाब दे दिया, उस जवाब में से आप, जैसे अभी हॉर्स था हमारा टॉपिक, उस जवाब में से कोई एक वर्ड, उस पे सवाल करें, उस पे जवाब सुने, फिर वहां से कोई और वर्ड ले लें, तो ये कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी चलती रहेगी। आप अगर 20-25 मिनट तक कॉन्वर्सेशन करेंगे, आधे घंटे तक कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो आपके पास टॉपिक्स ही टॉपिक्स होंगे। तो ये जब आप सीख रहे हैं लैंग्वेज, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पैटर्न्स पे फोकस करना है। पैटर्न, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल हॉर्स, हॉर्स इसमें कितने लेटर्स हैं? HORSE। इट्स अ 5 letter वर्ड, देन इट इज हॉर्स। हॉर्स, सो बीच वाला जो ओ आर है ब्रिटिश इंग्लिश में, ये ओ एंड आर, सिंस आर के बाद कॉन्सोनेंट है तो आर पढ़ा नहीं जाएगा। इन ब्रिटिश इंग्लिश आर इज ओनली प्रोनाउंस्ड व्हेन फॉलोड बाय अ वावल। सो HORS, आर के बाद एस है, तो इस केस में नहीं पढ़ा जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश में, सो इट विल बी हॉर्स। सो ओ एंड आर, ये कॉम्बिनेशन, ओ और ओ एंड आर, इनको पढ़ते हैं ओ। ओ, horse, it's not horse, it's horse। so जब आपने ये ओ आर का ओ साउंड, इट्स अ पैटर्न, आपने ये समझा। अब ऐसे कितने वर्ड्स हैं? BORN, इसमें भी है ओ आर, देन कॉन्सोनेंट, सो इट विल बी born, not born, born। okay, DORM, dorm। FORT, fort। CORK, cork। SHORT, short। you know, there are a lot of words जो OR वाले हैं, जहां पे हम ओ पढ़ते हैं, पढ़ना ओ है। सो इस horse, इस वर्ड से, जिसमें एक पैटर्न आपने ढूंढा, सो ये सिखाने वाला आपको बोलेगा, आपका ट्रेनर आपको बोलेगा, तो आपने जो horse का जो पैटर्न देखा, ओ आर वाला पैटर्न, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इस ओ आर की प्रोनाउंसिएशन, सो ये ओ आर वाले, ऐसे साउंड वाले जितने भी वर्ड्स हैं, उन सब पे उन सब में यही पैटर्न फॉलो करना है। सो व्हेन यू गेट टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड horse, this will help you pronounce all other words that have the same type of o or in them and that sound in them, जिसको हमने o, born पढ़ा, या born, या born, whatever, so हमने उसको born पढ़ना है। so I'm talking about British English। तो patterns, इनको फॉलो करना है। और टॉपिक, कॉन्वर्सेशन के लिए आपको कोई टॉपिक नहीं ढूंढना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स और कजन्स और सिबलिंग्स, व्हाट हैपेंस, द वर्ल्ड इज नॉट वाचिंग, you're just doing it in your room, you're just doing it somewhere in the park or wherever you are, and nobody is watching, nobody is going to rate you, and as long as you speak, you're learning. You don't know it, but you're learning, trust me. When you speak more and more, if you get nothing, at least you get fluency, speaking incorrect English, but you become fluent। तो फ्लुएंट आप हो रहे हैं, यहाँ से आप क्लास जा रहे हैं, क्लास आपने अटेंड कर रखी है, रोज रोज की क्लास जो है, तो उसमें आपके ग्रामर पे भी काम हो रहा है, आपकी प्रोनाउंसिएशन पे काम हो रहा है, आपका ट्रेनर आपको मॉनिटर कर रहा है, और जब आप उनके सामने बोल रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, तो आपकी उन गलतियों पे लेसन आपको दिया जाता है, आपकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके उनके रेक्टिफिकेशन, वहाँ कैसे क्या ठीक करना है, वो सारी चीजें आपको मिल रही है। आप यू टेकिंग नोट्स एंड जस्ट वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स। तो दिस इज हाउ यू लर्न। बट अब आप में से कोई सोचेगा कि विदाउट स्पीकिंग मैं बोलूंगा नहीं और अच्छा स्पीकर बनूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2, आप सोचेंगे मेरा ट्रेनर बहुत अच्छा है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करेगा ट्रेनर करेगा। ये भी कोई सही बात नहीं है। ट्रेनर आपको गाइड करेगा, ट्रेन करने वाला क्या करता है, वो आपको एक रास्ता दिखाता है कि ऐसे करना है, ये एक्टिविटी को ऐसे करना है, इस एक्टिविटी में ऐसे टेक पार्ट करना है, यहाँ आपने ये चीज़ करनी है, लेकिन करनी आपको ही है। लैंग्वेज लर्निंग में लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लर्नर। तो आप अपनी जिम्मेदारी, अपना काम ट्रेनर के सर पे डाल देंगे तो आप नहीं सीखेंगे। एक और चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, आपको कंसिस्टेंटली आपने एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, बोलना है, क्या भी करना है, कंसिस्टेंटली करना है। आप ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आज आप 1-2 दिन के लिए आपने एक्टिविटीज़ की, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आप 5-6-7 दिन की ब्रेक ले लेंगे, फिर करेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। सो कंसिस्टेंटली करना है, कंसिस्टेंट बेसिस। और एक और चीज़, पेशेंस। अब यू कैन नॉट बिकम अ ग्रेट स्पीकर ओवरनाइट।
आज आप सोए हैं, स्पीकर नहीं है, तो कल उठेंगे स्पीकर हो जाएंगे, बहुत बड़े स्पीकर हो जाएंगे. नो, इट टेक्स टाइम. It's just like going to the gym. So learning a language, acquiring a language, it demands patience, and you have to keep on working on things and being patient and being dedicated. And this is how you learn. This is how you learn. And there are a few other things, like I talked about a pattern like or. There are a lot of patterns. Pronunciation, it sometimes people feel like, how is it possible for a person, somebody who's never been to England or America, how is it possible for them to speak with correct pronunciation? They are fluent, their grammar is correct, and they're speaking with correct pronunciation. How is it possible? How do they get it? How do they make it? And how do they find it that easy to speak with correct pronunciation and without efforts? It's effortless English, and it seems like a very difficult job. But when you know those patterns, and when you practice a lot, practicing a lot helps you retain those patterns. And sometimes you learn a pattern, you know this pattern works this way, but you don't practice on it. If you don't practice on it, you tend to, yes, you remember it, but you won't be able to use it. You won't be able to follow the pattern because you haven't retained it. Retention is really important. And horse, the pattern of horse, or, it's all, born, dorm, cork, fort, a lot of things, short. And use the same words in a paragraph. Write that paragraph, read that paragraph, make sentences, ask questions on those words, and repeat those words somehow. Repeat those words over and over again, and you'll become permanent with it. So when you become permanent with it, you'll effortlessly speak with correct pronunciation. Now, what will happen if you don't practice on it? You'll know it is born, it's not born. It's born, not born, but you haven't practiced on it. Tomorrow you are speaking somewhere and spontaneously you'll see born again. Knowing that it's born, you'll not be able to say born, you'll say born because you haven't practiced on it. So practice and follow your trainer, and be patient, be dedicated, and be consistent. And this way you'll become a great speaker. Thank you.